Resource and Development Minister Smriti Irani's convoy met with an accident on the Yamuna Expressway after her convoy got caught up in a car pile. Irani, who was on her way to Delhi, escaped unhurt. However, the accident resulted in the death of one person and two others were also injured. Irani said that she ensured the people injured in the accident were taken to a hospital and thanked the others for helping out during the crisis. Correspondent Nitin from Mathura for ANI. शादी में जा रहे थे जिसमें मैं, मेरे पापा और मेरे भाई था। उसके बाद हम गाड़ी से जा रहे थे तो पीछे से किसी गाड़ी के हॉर्न बजते हुए आ रहे थे, तो हमारे पापा ने गाड़ी साइड में की। उसके बाद स्मृति ईरानी की काफिलाओं की गाड़ी थी जिसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी और हमारी गाड़ी वहीं गिर पड़ी और हम तीनों भी। उसके बाद मैं उसमें से दूसरी गाड़ी में से स्मृति ईरानी उतर के आई तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाकर मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मेरे पापा उठने की कोशिश कर रहे थे, तभी स्मृति ईरानी की काफिलाओं की उसी एक ही गाड़ी में से ही उस गाड़ी ने दोबारा टक्कर मारी। अगर वो टक्कर ना लगती तो शायद मेरे पापा जिंदा होते और वो वहाँ से चली गई। फिर क्या वो भी समझ की? वहाँ से उसके बाद वो लोग चली गई। उसके बाद एक और गाड़ी आई जो कि उसमें एक लेडी बैठी हुई थी, उसने हमारी मदद की और हॉस्पिटल में भी जाके उसने हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में भी जाके कोई मदद नहीं की, ना किसी ने दवाई लगाई ना कुछ। और वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे वो एक आराम से एक चैन की नींद सो रहे थे। अगर शायद वो उस टाइम पे हमारी मदद कर देते तो हमारे पापा जिंदा होते, आज मेरे साथ बैठे होते यहाँ पे। तो एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे पापा जी थे, वो जा रहे थे, शादी के लिए जा रहे थे। तो ये 5 बजे करीब घर से निकले हैं। तो दोनों मेरे भाई, एक चाचा जी का लड़का था काफ़ी छोटा है और मेरी सिस्टर थी, तो वो दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे थे, आराम से जा रहे थे काफ़ी। तो जैसे ही वो लोग उतरते हैं उधर से आगरा साइड से वो दिल्ली की साइड में जा रहे थे, उनको मथुरा में कोई प्रोग्राम था। और जो स्मृति ईरानी जी भी थी तो उनके काफ़िले की गाड़ियाँ आ रही थी काफ़ी। तो जैसे ही वो उनकी गाड़ियाँ आती वो भी उसी साइड से आ रही थी जिस साइड से मेरे पापा जी आ रहे थे। तो वहाँ से पीछे से उन्होंने एक उनकी काफिले की गाड़ी ने पहले टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद अभी ये बात मेरी सिस्टर ने अभी मुझे जस्ट बताई है कि होश आया, क्योंकि पहले होश में नहीं थी। अभी मुझे बता रही थी भैया ऐसे ऐसे हुआ था। तो उठने के बाद पापा जी ने बच्चों को देखने की कोशिश की है, उसने देखा है पापा जी को, बच्चे जैसे उठने की कोशिश करते हैं हल्का सा, तो पीछे से उन्हीं के काफिले की गाड़ी ने दोबारा से टक्कर मारी है उसमें, मेरे पापा जी में। तो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए हैं। तो फिर उसमें से थोड़ी देर के लिए स्मृति ईरानी जी थी जो वो वहाँ से उतरे हैं। उतरने के बाद बच्चों को देखा है, बच्चों ने मदद मांगी, मेरी बहन ने हाथ जोड़े हैं, गिड़गिड़ाई है वो तो, लेकिन उन्होंने कुछ मदद के लिए कुछ नहीं किया। गाड़ी में बैठे हैं, उनको दिल्ली जाना था, वो दिल्ली जा चुकी थी वो, लेकिन कोई मदद के लिए ना उनके पुलिस वाले थे जो भी थे। स्मृति ईरानी जी तो वो काफ़ी बड़ी मंत्री हैं, उसके नाते कुछ कहीं भी हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में कॉल करके पुलिस वालों से कॉल करके बता सकती थी जो भी सिचुएशन थी, तो जल्दी से जल्दी पहुंच जाते थे। बता रही थी मेरी सिस्टर कि 2 घंटे तक पापा जी वहाँ पर डले रहे, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ है। Union Human Resource Development (HRD) Minister Smriti Irani escaped without major injuries in an accident on the Yamuna Expressway on Saturday night. However, one person, a doctor whose motorcycle was part of a deadly pile-up, was not so fortunate. He died on the spot and 2 minors traveling with him suffered injuries. This is what Irani tweeted soon after the incident. She said she tried to reach medical help for those injured in the accident. But in an affair lodged at a police station in Mathura by Agra-based Dr Ramesh Nagar's son Abhishek, it is being alleged that the medical practitioner's daughter and nephew had to wait 7 hours before getting proper medical help, the Times of India reported. He alleged that Irani ignored the victims and moved away. Police took the children to hospital. Irani was returning from Vrindavan where she attended a Bharatiya Janata Yuva Morcha convention. According to the FIR, a speeding car with registration number DL3CBA 5315 allegedly caused the accident in which Dr. Nagar lost his life. He alleged that the car was part of the cavalcade of the HRD Minister. Abhishek claimed Nagar's 8-year-old nephew Pankaj was not given first aid at the Mathura district hospital and was in pain for almost 7 hours. He was shifted to Agra Medical College, where doctors treated him for a fractured arm. But Mathura District Hospital's Chief Medical Superintendent Dr Kamta Prasad Garg told TOI that the 2 minors were given antibiotics, painkillers and put on drips. On Monday,
Irani's office denied the charge that she neglected the victims and said that the Honda City car mentioned in the FIR was not part of her convoy. Her spokesperson told NDTV that despite being hurt, she stopped to call a senior police officer and ask him to send an ambulance. Eyewitness Manoj Chopra told the media that her convoy crashed into the vehicles which were already piled up on the Yamuna Expressway, a version backed by the police. Chopra said Irani came out of her car and immediately made calls for help. And within 10 minutes an ambulance arrived. Smriti Irani's convoy had reached accident spot 7-8 minutes after the accident, in which one person died and 2 were injured, said police official Rakesh Yadav. However, police and eyewitness accounts clash with the statement of Sandali Nagar, the 16-year-old daughter of Dr Nagar, who claimed that Irani ignored her pleas to save her father who was lying on the road with severe injuries to his head. "We were going to attend a marriage ceremony and our motorcycle's speed was very slow. Suddenly, Smriti Irani's vehicle hit us and our motorcycle got slipped. She came out of her car to see us. My father was lying injured on road after the mishap. I asked her to help him but she denied," ABP quoted Sandali as saying, a charge her brother supported. "Our father was lying injured on spot. When Smriti Irani came down from her car, my sister pleaded before her to take our father to hospital but she ignored," ABP quoted Abhishek as saying. A Twitter user posted photos, purportedly of the FIR, alleging that the Irani got into her car and drove away from the accident site. शादी में जा रहे थे जिसमें मैं, मेरे पापा और मेरे भाई था। उसके बाद हम गाड़ी से जा रहे थे तो पीछे से किसी गाड़ी के हॉर्न बजते हुए आ रहे थे तो हमारे पापा ने गाड़ी साइड में की। उसके बाद स्मृति ईरानी की काफिलाओं की गाड़ी थी जिसने हमारी गाड़ी में टक्कर मारी और हमारी गाड़ी वहीं गिर पड़ी और हम तीनों भी। उसके बाद मैं वहाँ उसमें से दूसरी गाड़ी में से स्मृति ईरानी उतर के आई तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाकर मदद मांगी लेकिन उन्होंने मदद के लिए साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मेरे पापा उठने की कोशिश कर रहे थे तभी स्मृति ईरानी की काफिलाओं की उसी एक ही गाड़ी में से ही उस गाड़ी ने दोबारा टक्कर मारी। अगर वो टक्कर ना लगती तो शायद मेरे पापा आज जिंदा होते और वो वहाँ से चली गई। तो क्या बोगी समाज की? वहाँ से उसके बाद वो लोग चली गई। उसके बाद एक और गाड़ी आई जो कि उसमें एक लेडी बैठी हुई थी, उसने हमारी मदद की और हॉस्पिटल में भी जाके उसने हमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में भी जाके कोई मदद नहीं की, ना किसी ने दवाई लगाई ना कुछ। और वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे वो एक आराम से एक चैन की नींद सो रहे थे। अगर शायद वो उस टाइम पे हमारी मदद कर देते तो हमारे पापा जिंदा होते, आज मेरे साथ बैठे होते यहाँ पे। तो एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे पापा जी थे, वो जा रहे थे, शादी के लिए जा रहे थे। तो ये 5 बजे करीब घर से निकले हैं तो दोनों मेरे भाई, एक चाचा जी का लड़का था काफ़ी छोटा है और मेरी सिस्टर थी, तो वो दोनों बाइक पे बैठ के जा रहे थे, आराम से जा रहे थे काफ़ी। तो जैसे ही वो लोग उतरते हैं उधर से आगरा साइड से वो दिल्ली की साइड में जा रहे थे, उनको मथुरा में कोई प्रोग्राम था। और जो स्मृति ईरानी जी भी थी तो उनके काफ़िले की गाड़ियाँ आ रही थी काफ़ी। तो जैसे ही वो उनकी गाड़ियाँ आती वो भी उसी साइड से आ रही थी जिस साइड से मेरे पापा जी आ रहे थे। तो वहाँ से पीछे से उन्होंने एक उनकी काफ़िले की गाड़ी ने पहले टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद अभी ये बात मेरी सिस्टर ने अभी मुझे जस्ट बताई है कि होश आया, क्योंकि पहले होश में नहीं थी, अभी मुझे बता रही थी भैया ऐसे ऐसे हुआ था। तो उठने के बाद पापा जी ने बच्चों को देखने की कोशिश की है, उसने देखा है पापा जी को कि बच्चे जैसे उठने की कोशिश करते हैं हल्का सा तो पीछे से उन्हीं के काफ़िले की गाड़ी ने दोबारा से टक्कर मारी है उसमें मेरे पापा जी में। तो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए हैं। तो फिर उसमें से थोड़ी देर के लिए स्मृति ईरानी जी थी जो वो वहाँ से उतरी हैं। उतरने के बाद बच्चों को देखा है, बच्चों ने मदद मांगी, मेरी बहन ने हाथ जोड़े हैं, गिड़गिड़ाई है वो तो, लेकिन उन्होंने कुछ मदद के लिए कुछ नहीं किया। गाड़ी में बैठे हैं और उनको दिल्ली जाना था, वो दिल्ली जा चुकी थी वो, लेकिन कोई मदद के लिए ना उनके पुलिस वाले थे जो भी थे। स्मृति ईरानी जी तो वो काफ़ी बड़ी मंत्री हैं, उसके नाते कुछ कहीं भी हॉस्पिटल में या इमरजेंसी में कॉल करके पुलिस वालों से कॉल करके बता सकती थी जो भी सिचुएशन थी, तो वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाते थे। बता रही थी मेरी सिस्टर कि 2 घंटे तक पापा जी वहाँ पर डले रहे, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ है। Minister Smriti Irani's office today denied that she had left without helping after an accident on the highway on Saturday in which a doctor was killed and his young nephew was critically injured. She has also rejected the charge that the car that hit the doctor's bike was a part of her convoy.
Agra-based Dr Ramesh Nagar was killed after he was hit for the second time by a car in the minister's convoy. His children have alleged in an FRO police complaint. Dr Nagar's 15-year-old daughter Sandali was riding pillion along with her 12-year-old cousin, who was severely injured. The teenager alleges that she begged for help but Smriti Irani ignored us, contradicting the minister's tweet after the accident. Ms Irani's spokesperson has strongly denied the allegation. He said that car number 5315 named in the FAIR is not part of the minister's convoy. He also says that the minister stopped to call a police officer for an ambulance even though she was hurt in the pile-up. The minister's version has been confirmed by the police officer she called. The bike was hit by a Honda City. 2 other cars also hit it. Then came Smriti Irani's pilot car. The minister reached the spot 7-8 minutes after the accident. She got out and called our control room for help around 9:20 p.m. It was drizzling and she got out of the car to see what happened, said Rakesh Singh to NDTV. The officer said Ms Irani left after the police and the highway rescue medical van arrived at the spot. Sandali Nagar claims that she and her cousin waited for several hours for medical attention. The HRD minister's car hit our bike, which was at slow speed. Our bike fell. I asked for help but they said no. They said you can get help later. If she wanted, she could have helped us. If she had helped us, my father would have been there with us, said Sandali. She claimed that Ms Irani walked out of her car, which was damaged, got into another car and drove off. Ms Irani was on her way to Delhi after attending a BJP youth convention in Mathura when her car was caught in the pile-up on the Yamuna Expressway.